Hi, good evening, all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay. सर अभी तक 35 लेक्चर और रिकॉर्डिंग अभी मिली नहीं है एक्चुअली अपलोड नहीं हुआ Okay. कोऑर्डिनेटर से तो काफी बार मैसेज भी किया है एंड देन कॉल भी किया है बट कुछ रिस्पांस नहीं है यार उसका तो आइडिया नहीं है मुझे, बट आप लोग कोऑर्डिनेट कीजिए. क्या अपडेट है इसका? भाई इसका कोई अपडेट मेरे पास नहीं है. आप लोगों को प्लीज कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग. यार डाउट फिर आपसे पूछ सकते हैं क्या गाइस? इसके लिए आपको डाउट के लिए फिर आई डोंट थिंक सो कि यस, अगर छोटे मोटे ऐसे डाउट्स हैं या कुछ ऐसे डाउट्स हैं जहाँ ब्लॉकर हो, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, जिसमें थोड़े कम टाइम लगे. अगर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कुछ डाउट है, देन यू मस्ट हैव टू कोऑर्डिनेट विथ लाइक मेंटर. Okay, so let me share my screen. And today we are going to start our e-commerce project, which is basically a monostack project where we are going to implement all the things: a backend, a front end, a UI library, a database, a MongoDB, each and everything we are going to start from scratch. So in previous lecture, we have covered something like what we are going to do in uh, couple of like classes. Or so what we are going to do is basically we are going to build an e-commerce project where we are going to implement all the functionalities related to it, like all the things, each and every functionality which belongs from e-commerce we are going to build from scratch. So okay, so let me okay, my screen is visible. Yes, sir. Okay.
So I'm going to start, and we have a second thing. Okay. So before we are going to, these are the sections which we are going to cover in couple of uh, lessons or couple of classes, where first section is going to set up a node project from scratch. So before going to set up this project, we are going to do understand something about backend. So basically, the couple of classes is for the backend development, where we are going to like work with MongoDB, a database, and a backend. So we are just going to start from scratch. So there are some theoretical concepts where our backend technology is uh, like is worked on. So basically, what I want to say here is that we know that we are familiar. If you are working as a full stack developer, सर थोड़ा zoom कीजिए ना. yeah, visible. Yes, sir. So if you're going to work as a full stack developer, so we have a front end, back end, and a database, right? So what we are going to do here, we are going to start from now. We have a like basic understanding of front-end development, where we know that some HTML, CSS, or some UI library like Bootstrap. Apart from that, we have a understanding of JavaScript and React.js, and how React works as in a front end. We have a like basic understanding of it, right? Nice. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So now we have a like a basic understanding of front end development. Now we are going to cover our back end development, and we are covering a project. So like आपको practical analysis भी हो जाएगा कि कहाँ कैसे use करना होता है. So first thing, second thing is what we are going to learn backend technology. Okay. So goal for backend. Okay. So we know that if we are talking about JavaScript, then React is what? Front end? What? Front end JavaScript. Screen रुक गई है, आप मतलब stuck हो गई है. Okay. सबको स्क्रीन स्टक है क्या? सर बहुत स्लो आ रहा है सर. हो गई सर. अभी सही है सर. सर विजिबल था, अभी कुछ सेकंड्स के लिए हुआ था फिर. Okay. Is it visible? Yes, sir. Okay. So now we are going to understand Node.js. Node.js or their framework, which is also called what? Express.js. Right. So what we are going to do, we are going to understand a Node.js or their framework Express.js. So our goal is to build different APIs, right? And these APIs are connected. APIs are connected with a database. And what we are going to understand for a database is a MongoDB. What? MongoDB. DB. And then if we have built some APIs and these APIs are connected with our database, then we are going to integrate this API
integrate these APIs in what? React. So what it means, your front end is now connected with what? A back, Node.js. Backend. and a back end is connected with what? Front MongoDB. MongoDB. Of front end. MongoDB. It means a database. It means what? Database. Nice. So with this approach, what we have? We have a full stack, full placed a website or an e-commerce website where your front end is integrated with your back end and your back end is integrated with what? A database. तो आपके पास क्या होगा कि you have a clear understanding of what? A front end, a back end, and a database. Nice. So here our goal is what? Using the Node.js or the framework Express.js, we are going to build a different APIs, and these APIs are connected with our database, so we can utilize these APIs in our front-end application or in a React side. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So yes, I'm excited, और I think आप लोग भी excited होंगे. Yes, sir. We are Yes, sir. excited too. Nice. Cool. Okay. So what we have here, we have a Node.js. देखो, अब इससे तुम्हें प्रॉफिट क्या होने वाला है ना कि if you learn JavaScript, अब देखो, for backend you can use, instead of using this Express.js, you can use what? Python, or the framework of Python, which is called a Django, which we have covered in the in this like not I in this like what यार क्या है तुम लोग in this class. Okay, so what it means कि we are going to build, we can build APIs using what? A Python Django. But point ये है कि you have learned the JavaScript. Now, as a programmer, your parent language is what? What? A JavaScript. तो अगर आपका पेरेंट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, Node.js भी क्या है? जावास्क्रिप्ट में ही बिल्ड हुआ है. So what it means कि with a single JavaScript, a parent language, you can build a both of them, like Node.js or a React.js applications. But अब मान लो कि एज अ प्रोग्रामर एक लैंग्वेज पे तुम्हारी अगर सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है तो तुम्हें रिएक्ट भी आ जाएगी, तुम्हें Node.js, Express.js भी आ जाएगी, है ना. अब दूसरा अप्रोच है कि भैया एक लैंग्वेज सीख के रिएक्ट पढ़ो, दूसरा लैंग्वेज सीख के Django करो. Yes, you can, like, it's totally depends on you guys what you are going to prefer, but personally I prefer React and Node.js or MongoDB because it gives me some profile like monostack developer, where like with a single parent language we can build a front-end applications, a back-end applications, or a full stack applications. राइट. तो अब आपके पास दो ऑप्शंस होंगे. आगे से हम ये आगे पाइथन भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं. तो लाइक यू हैव समथिंग लाइक तुम्हें Express.js में आप APIs बनाने हैं तो आप APIs Express.js में बनाओ, या आप Django में बनाना चाहते हो Django में बनाओ. इट टोटली डिपेंड्स ऑन you guys. You utilize these APIs, either of these APIs, in your React application. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो Okay. ये पाइथन बैकएंड का लैंग्वेज है. या जो ये Express.js है ना, इसी की इक्विवेलेंट ये Django है. ओके सर. बट इस Express.js का पेरेंट लैंग्वेज कौन है? ये जावास्क्रिप्ट. तो अब देखो, तुम्हें जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स से तुम फैमिलियर हो, समझ पा रहे हो Yes. मेरी बात को? क्यों Yes, sir. इजी होना है? क्योंकि तुम्हें जावास्क्रिप्ट आ गया, तुम रिएक्ट में काम थोड़ा बहुत कर चुके हो, तो अब तुम्हें ना ये सिंटैक्स का प्रॉब्लम नहीं होना है. तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस Express.js. बट अब नए से तुम्हें फिर पाइथन के सिंटैक्स Django फॉलो करना, इट इज लाइक लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. बट दोनों का काम सेम है, दोनों के पैकेजेस सेम है, दोनों का अप्रोच सेम है, बट
difference is what? Difference is what? The writing of code, the syntax of the code. It means अगर आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, या आप किसी दूसरी कंट्री के लैंग्वेज में बोलो, अगर आप कोई बात सेम कर रहे हो तो बस लैंग्वेज डिफरेंट है, मतलब सेम है. समझ रहे हो ना? तो Express.js and this Django is equivalent, but their parent language is different. Nice. So now we are going to understand what is Node.js basically. Okay. So before okay. So अब एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे. When you actually in JavaScript, there are two type of rendering. आप बोल सकते हो there are two types of rendering. And what is this rendering? First is client side, and second is what? Server side. Server side. So it means what? कि आप एक जावास्क्रिप्ट से अगर आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, then this JavaScript act as a what? Client side. And your browser is basically a client. जिस ब्राउजर पे वो चीजें सर्व होती है ना, जहां पे कोई एप्लीकेशन आपको दिखता है, that is called what? A client. Is it clear? And second is what? A server. So basically with the help of JavaScript, you can build your own server. With the help of JavaScript, you can build your own server. अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि as a front-end developer, what you have to do? You have to make a request on what? On server. आप यही बनाते हो ना? आप Yes, जब sir. एक फॉर्म फिल करते हो, साइन इन की फॉर्म फिल करो, आप एक एपीआई रिक्वेस्ट करते हो. Request means what? You are going to make a request on what? On any server. So this is what? A client side request. This request is coming from what? A client side. Client side means what? From your browser. भैया जब आप यूजर के बटन पे क्लिक करते हो तो एक नेटवर्क में रिक्वेस्ट जाता है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना, एपीआई जब इंटीग्रेट करा था एक सिंगल Yes, sir. यूजर्स का. तो यू आर गोइंग टू मेक अ रिक्वेस्ट ऑन सर्वर. So as a front-end developer, you are going to make a request on server, and this is called what? A client request. So this kind of handling of JavaScript by this React is what? A client-side rendering. And the second thing is what? This JavaScript have multiple things to do. It can do what? A server side. It can create, this JavaScript also create a server where you are going to request any API. इट मीन्स कि जब आप कोई एपीआई रिक्वेस्ट करते हो अपने ब्राउजर से, तो ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी तुम्हें जावास्क्रिप्ट दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और जहां तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो उस वो सर्वर भी तुम्हें जावास्क्रिप्ट क्रिएट करके दे रहा है. दैट्स व्हाई जावास्क्रिप्ट इज अ पावरफुल व्हाट? अ लैंग्वेज. इट गिव्स यू बोथ थिंग, लाइक फॉर क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट एंड टू हेल्प यू टू मेक अ सर्वर. इज इट क्लियर? Yes, sir. एंड सर्वर में जहां मैं सर्वर की बात करूं, आप समझना कि आप बैकएंड की बात कर रहे हो, क्योंकि आप बैकएंड के सर्वर पे ही कोई रिक्वेस्ट करते हो. ठीक है ना? Yes, sir. सो आई एम गोइंग टू लाइक व्हाट इज Node.js. अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें Node.js की, तो बेसिकली Node.js इज एन इवेंट ड्रिवन और non-blocking IO model using JavaScript as its main language. आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो इसमें. So what it means? Node.js is an event-driven or non-blocking IO model using JavaScript as its main language. Okay, so what it means? What is event-driven or what is non-blocking IO model? We are going to understand this thing. So you can see it helps
it helps to build scalable network applications. Network applications. So we are going to understand what is this non-blocking IO model or event-driven. Before understanding this, the second thing is Express.js. So you can say Express.js is minimal and flexible node JS web application. या आप ये बोल सकते हो, it provides a set of features for a web or mobile applications. समझेंगे अच्छे से? So basically what it means, Express.js is a framework of a Node.js which follows a particular pattern. ठीक है, सबसे पहले इवेंट ड्रिवन और नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं. और दिस इज लाइक, आप बोल सकते हो कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में व्हाट इज नोड.जेएस पूछता है कि नोड.जेएस बेसिकली है क्या, तो दीज टू टेक्निकल टर्म्स मेक अ वेरी गुड सेंस कि यस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इवेंट ड्रिवन और व्हाट इज नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल. ये इंटरव्यू पर्पस के लिए ऐसे आप नोड.जेएस को बोल सकते हो कि इट गिव्स यू समथिंग लाइक इट गिव्स यू और इट प्रोवाइड्स यू और इट मेक्स यू it gives you to like create a server for a JavaScript applications, and Express.js is the framework of Node.js which helps you to make or build a APIs. Okay, so आप बोल सकते हो कि इवेंट ड्रिवन पहले देख लेते हैं. इवेंट ड्रिवन क्या होता है? ओके, चलो तो इवेंट ड्रिवन क्या होता है? इवेंट ड्रिवन means when you make a call means what? Make a API call. Your node server catches this request. Node server catches this what? Request and register of function. मेरी बात को समझना, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ. गिव मी अ सेकंड, ये भी समझ में आ जाएगा तुम लोगों को. देखो कहाँ थे हम? नहीं यार. ओके, देखो इस एप्लीकेशन में when we talk about this bookstore application, we have created a normal JSON server. हमने क्रिएट किया था ना नॉर्मल JSON सर्वर. सो अगर मैं इस JSON सर्वर को स्टार्ट करता हूं, चलता क्यों नहीं है? हाँ ठीक है. हाँ, अगर मैं JSON सर्वर ये स्टार्ट करता हूँ और सेकंड सेल में मैं क्या करता हूँ, npm स्टार्ट कर देता हूँ. npm स्टार्ट. सो देखना, अब इमेजिन करो दिस इज अ JSON सर्वर विच वी क्रिएटेड. इट गिव्स यू, इट सर्व्स यू ऑन व्हाट? 8000. किस पोर्ट पे सर्व कर रहा था तुम्हें? 8000 पे, मतलब दूसरे सर्वर पे. अब मान लो मैंने जब ये सर्वर स्टार्ट करा
और ये आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट करा। जब भी मैं ये ऐड बुक, कोई बुक ऐड करने के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू माय like yes yeah, so when I go inside this ad book, okay, and I'm going to open my network tab. This is our what network tab, and I'm going to submit. Okay, I'm going to open inside view, and this is our author name, this is our cover image. Okay, so when I go to hit this enter button, there is one API request. क्या होगा? फ्रंट एंड से एक API रिक्वेस्ट बैकएंड पे जाएगा, जाएगा ना? तो देखो, when I click on the save button, yes, एक API रिक्वेस्ट गई है। अब क्या हुआ कि ये जो API रिक्वेस्ट गई है सेव बुक का, यहाँ पे हमने कुछ पेलोड में प्रोवाइड करा है, और दैट्स पेलोड is now going to save in our what? In our database. db.json. It means what? What I want to say is event driven means when you make an API call, your node server catches this request and register a function. It means कि जैसे आपने इस बटन पे क्लिक करा, Node.js इस रिक्वेस्ट को क्या किया? इस रिक्वेस्ट को क्या किया? सर्वर ने इस रिक्वेस्ट को कैच करा, और इसको कैच करने के बाद इसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन को रजिस्टर कर दिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन, अब देखो क्या हुआ, समथिंग लाइक व्हेन यू गो इनसाइड एनी रेस्टोरेंट, देन वेटर का काम क्या होता है? आप जाते हो, कुछ रिक्वेस्ट करते हो कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है। सपोज उस टाइम पे 5-7 लोग और पहुंचते हैं, उन्होंने भी कुछ ऑर्डर करा, तो वेटर ऐसा थोड़ी करेगा कि तुम्हारे रिक्वेस्ट को लेके क्या करेगा? तुम्हारे रिक्वेस्ट को, अब देखो मैं बैकएंड की बातें कर रहा हूँ, फ्रंट एंड की बातें नहीं कर रहा हूँ। तो समझो कि जब आपने कुछ रिक्वेस्ट करा, तो वेटर क्या करेगा? तुम्हारे रिक्वेस्ट को भी लेगा, वो जाके कुक को बोल दिया कि यस इट इज लाइक दिस इज आवर व्हाट ऑर्डर। सपोज उस टाइम 5 और लोग होंगे जिन्होंने उन्हें भी कुछ ऑर्डर करना होगा, तो वो वेटर क्या करेगा? उनके ऑर्डर्स को भी एक्सेप्ट करेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब वो बना के लाके तुम्हें देगा उसके बाद वो दूसरा ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो समथिंग लाइक इन Node.js होता क्या है कि जब कोई आप रिक्वेस्ट करते हो, तो नोड सर्वर उस रिक्वेस्ट को कैच करता है और उसके अगेंस्ट एक फंक्शन को रजिस्टर कर देता है। अब इसके बीच कोई दूसरा भी API कॉल होगा, तो तुम्हारा सर्वर क्या करेगा? उसके भी रिक्वेस्ट को लेगा और उसके अगेंस्ट एक फंक्शन को क्या कर देगा? कॉल करेगा। अब वो फंक्शन क्या कर रहा होगा कि भाई जिसका भी रिक्वेस्ट सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, उसके रिक्वेस्ट को लाके, उसके रिस्पॉन्स को लाके क्या करेगा? बैक सर्व कर देगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. So that is called event driven. Event driven means when you make an API call, your node server catches this request and register a function. And second is, what is non-blocking IO model? It means कि when you make a multiple API calls, your node server catches all the requests and register a function accordingly. And if it gives any response, then it just gives you to the client. Client means a browser. Is it clear? Yes, sir. नाइस, ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम डेप्थ अबाउट व्हाट इज Express.js। एंड अब देखो, एक मैं बहुत अच्छी बात तुम लोगों को बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देयर आर लॉट ऑफ, अब यहाँ थोड़ा सा हल्का एडवांस है, बट इट हेल्प्स यू अ लॉट इन लाइक इन फ्यूचर, बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, या ये तो मुझे नीचे ही लिखना पड़ेगा क्या? ठीक है, मैं ना एक और ऐप खोल लेता हूँ। चलो, Express.js। देखो, Node.js तुम्हें क्या करता है? एक सर्वर क्रिएट करके देता है। अब उस सर्वर पे जो भी तुम बैकएंड का कोड लिख रहे होगे, वो कहाँ लिख रहे होगे? तुम कहाँ लिखोगे? Express.js के अंदर। समझ पा रहे हो?
Yes, sir. Node.js only gives to only make one what? A server for you. It only creates a server for you. And if you are going to write any backend code inside what? Express.js. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So मैं यहाँ पे कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डिजाइन पैटर्न्स. डिजाइन पैटर्न्स आर समथिंग लाइक एक पैटर्न बनाया जाता है, उस पैटर्न को एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, उस पैटर्न को बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. कभी भी अगर आप कोड लिखोगे तो एक पैटर्न होता है विच यू हैव टू व्हाट? A follow, which you have to follow. Something like design patterns and everything. Like in front-end development, what we have, like when you are talking about React, then you have what? Two type of component. First is what? A class-based, and second is what? A functional-based. So when you're talking about class-based components, what is coming in your mind? Oops. Oops means what? Object-oriented programming. It means what? It is also a design pattern for the class-based components. So जब आप class based components के साथ काम करोगे React, then you are going to follow what? Oops, object oriented programming. Or when you are talking about a functional approach, then you are going to follow what? A functional paradigms. These are also what? A design patterns for what? Front end. Is it clear? Yes, sir. Functional approach. You have functional components and you can say functional approach. Nice. So when you're talking about design patterns for backend, and this design pattern, like pattern is something which is used with any language. Pattern is something which you can use with any language. बहुत प्यारा चीज है, एक बार ये समझ में आएगा तो लाइक तुम्हारे लिए कोई भी बैकएंड की टेक्नोलॉजी इज लाइक बहुत इजी हो जाएगी. तो डिजाइन पैटर्न फॉर बैकएंड. सो हियर आप में से बहुत लोग सुने होंगे एमवीसी. एमवीसी पैटर्न किसी ने सुना है? नहीं सर. नहीं सर. No, sir. तो दिस इज लाइक समथिंग विच इज लाइक देखो ये वे होता है और मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं कि देखो अच्छा आगे पहले पढ़ते हैं फिर समझेंगे. तो एमवीसी पैटर्न. सो आर एक्सप्रेस.js even MVC pattern is something which we are going to I'm going to explain it what is MVC pattern. So पहले इसकी benefit समझते हैं, इसकी power समझते हैं. For I think I have worked with Laravel, I have worked with Django, I have worked with something like Express.js. Apart from that, I also work with something like Cake PHP and the PHP, core PHP. So basically, in most of the cases, MVC pattern is something like if you are a Laravel developer, Laravel is something what a PHP framework. Laravel is also a backend like backend framework where you can build an APIs. So आप Laravel की बात करो, आप Express की बात करो, ये सब कुछ क्या करता है? एक पैटर्न फॉलो करता है बैकएंड के लिए और यही पैटर्न ये सबसे पॉपुलर पैटर्न है. तो इससे क्या होता है कि अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो यू कैन वर्क विथ Laravel, Express, Django, एनी फ्रेमवर्क. अगर आपको सिंटैक्स आता है तो आपको कोड समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा. You can follow many other approaches, but I generally follow MVC pattern.
Why it is so? Because ये क्या होता है कि मैं अगर किसी भी बैकएंड की टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ तो मुझे उस पैटर्न से ना कोड को समझना इजी हो जाता है और कोड को डिबग करना इजी हो जाता है। इसका इंपॉर्टेंस तुम्हें थोड़ा आगे समझ में आएगा। सो अब क्या है इसका मतलब देखते हैं। सो एमबीसी पैटर्न मीन्स मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। देखो अभी हम डिजाइन पैटर्न फॉर बैकएंड और मैं अब यहां मैं लिख देता हूं एक्सप्रेस, ठीक है। तो डिजाइन पैटर्न, तो एमबीसी पैटर्न पे क्या है कि एम फॉर मॉडल, बी फॉर व्यू एंड सी फॉर व्हाट, अ कंट्रोलर। सो व्हाट इट मींस, if you are working as a backend developer, if you are working as a backend developer, then there are very easy to debug. Why it is? Because आप जो प्रोजेक्ट का सेटअप बनाओगे ना, फोल्डर स्ट्रक्चर बनाओगे, आप इस फॉर्मेट में बनाओगे। यू हैव मॉडल, यू हैव अ कंट्रोलर, यू हैव अ व्यू। अब देखो कैसे काम करता है। अगर मैं यहां पे जाता हूं, चलो पहले यहीं देखते हैं। मॉडल इज समथिंग, model is something which is connected with what? Okay, पहले मॉडल एमबीसी को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आप बोल सकते हो मॉडल, व्यू, कंट्रोलर is an architectural pattern that application is divided into three main logical components. मतलब अगर मैं किसी भी बैकएंड एप्लीकेशन की बात करूं तो मुझे पता है कि जो मेन हमारा एप्लीकेशन है, इंटायर बैकएंड एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, थ्री मेन लॉजिकल कंपोनेंट्स। फर्स्ट मॉडल, व्यू एंड व्हाट, कंट्रोलर। ओके, सो व्हाट इट मींस, अगर मैं एक एक करके डिफाइन करूं मॉडल क्या है, तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत मजा आएगा। आपके बैकएंड एप्लीकेशंस किससे कनेक्ट होते हैं? डेटाबेस से। Yes, sir. डेटाबेस ही कनेक्ट होते हैं ना। सो मॉडल इज द डेटाबेस इंटरफेस which let you interact with the data, with the database। समझ पा रहे हो सब? जो थ्री मेन लॉजिकल कंपोनेंट्स हैं for what, a backend is what, model, view and controller. So model is what, it is a database interface which let you interact with the what, Database. database. So you are going to something like, you can create different schemas of your application, okay। स्कीमास क्या होता है ना, बेसिकली मान लो कि तुम अब डेटाबेस की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं देखो पहले मैं तुम्हें सीक्वल ही दिखाता हूं, माई सीक्वल ही दिखा देता हूं। तो वेज माई सीक्वल, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, जैम। तो मैं तुम्हें माई सीक्वल ही दिखाता हूँ, फिर मोंगोडीबी की बात करेंगे। माई सीक्वल से तुम्हें स्कीमा दिख जाएगा कि कैसा स्कीमा होता है बेसिकली।
आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई, देखो अब ये जो जैम सर्वर है ना, दैट सर्वर इज यूजिंग फॉर व्हाट PHP लारावल। तो अपाची वहां पे जो हमें सर्व करता है, देखो अभी हम एक्सप्रेसजेस पे काम करने जा रहे हैं फॉर बैकएंड। फॉर वहां के लिए हमें कौन सा सर्वर हम यूज करेंगे? नोड सर्वर। बट बिकॉज, सॉरी गाइस, समझ पा रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, अभी sir. देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपाची सर्वर स्टार्ट करा है। इट मीन्स दिस अपाची सर्वर इज यूज फॉर व्हाट? फॉर लाइक लारावल कोऑर्डिनेटर केक PHP। तो इसके लिए हमें अपाची सर्वर यूज करना होता है फॉर नोड एक्सप्रेसजेस एप्लीकेशंस और जावास्क्रिप्ट बैकएंड। वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? अ नोड सर्वर। अब अपाची सर्वर हमने स्टार्ट कर दिया, अब मैं अपने डेटाबेस को स्टार्ट करता हूँ। दिस इज माई सीक्वेल। तो ये भी अब स्टार्ट हो गया है। ओके, सो आई एम गोइंग टू PHP my admin, नहीं, हाँ, लोकल होस्ट PHP my admin। अब देखोगे तुम, अब देखो डेटाबेस कैसा दिखता है। या सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एप्लीकेशन इनसाइड दिस, अब देखो अगर मैं यूजर का ही देखूं इसमें, तो ये सारे क्या है? तुम्हारे टेबल्स हैं एप्लीकेशन के। दैट इज योर डेटाबेस। अगर मैं देखो यूजर्स टेबल खोलता हूं, तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे। अब मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, दैट इज व्हाट? अ स्ट्रक्चर। दिख रहा है तुम्हें? आईडी, रोल आईडी, यूजर नेम, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, DOB, वेट, हाइट, बायो, प्रोफाइल इमेज, बैकग्राउंड इमेज, एड्रेस, is active, device ID, provider type, provider key, password and all. These are what? These are what? Of fields in your database. So when you want to save some data inside it, then अगर आप इसमें ब्राउजर में जाओगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ID, role ID, username, name, last name, email, gender and all the things दिख रहे हैं। Yes, तो sir. अब इस यूजर आईडी के पे ये उसका क्या है? ईमेल है, ये उसका जेंडर है। तो ऑल द इंफॉर्मेशन आर सेव्ड इन व्हाट? इन व्हाट? इन व्हाट? इन योर डेटाबेस। सो अगर मैं स्कीमा की बात करूं, तो जो मॉडल होता है ना, वो क्या होता है? इसका एक स्कीमा क्रिएट करके अपने एप्लीकेशन में रखता है। समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर, कि तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा दिखना है। मान लो अब मैंने बोल दिया कि अगर तुम बैकएंड पे काम करोगे तो तुमने एक डेटाबेस बना लिया। मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, बट डेटाबेस आपने बना लिया। अब ये डेटाबेस की जो फील्ड्स होते हैं, ये आपके एप्लीकेशन में कैसे आएंगे? कि कैसे आप फैच कर पाओगे? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? API call. मॉडल्स, नॉट API कॉल ब्रो, मॉडल्स। API तो भैया कॉल करोगे, वो तो फ्रंट एंड से कॉल करोगे। अभी API बनाने जा रहे हो ना, तो API बनाने का सबसे पहला काम क्या करना है आपको? मॉडल For बनाना है। an API, you have the first thing, you have to create a model. So model is what? A database interface that interact with the database. You can create a different schemas of your application. So जो schema आप create करोगे, वो schema क्या होगा? इस database के टेबल से क्या होगा? कनेक्टेड होगा। समझ रहे हो? Yes, sir. ओके, सो क्योंकि बैकएंड के लिए हम MVC पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो चलो मुझे मॉडल समझ में आ गया कि व्हाट इज मॉडल। एंड देन सेकंड इज कंट्रोलर। सो देखो पूरे बैकएंड एप्लीकेशन में यही सारी चीजें होंगी, मॉडल, कंट्रोलर, और इसके बीच के कुछ पार्ट्स होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो क्या होता है? कंट्रोलर is the part of the part that take care of client request, processing which handles HTTP request,
और एपीआई रिक्वेस्ट। देखो अब ये तुम्हारा मॉडल क्या है, डेटाबेस से कनेक्टेड है। कंट्रोलर में वो लॉजिक होते हैं, कंट्रोलर के अंदर वो लॉजिक होता है जो भी तुम रिक्वेस्ट अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन से करोगे। यहां तुमने एड बुक करा तो ये क्या हुआ, एक रिक्वेस्ट गया था ना। सो द मेन लॉजिक कंट्रोलर, देखो कंट्रोलर क्या होता है ना कि बैकबोन होता है। अब कंट्रोलर क्या करता है, समझना ऐसे कि मॉडल तुम्हारे किससे कनेक्टेड है, तुम्हारे डेटाबेस से। अब जो तुम्हारा कंट्रोलर होता है उसके अंदर मेन लॉजिक होता है समथिंग, कि जब तुम एक रिक्वेस्ट करते हो तो रिक्वेस्ट का टाइप भेजते हो, मेथड भेजते हो ना, Yes, sir. पोस्ट। इट मीन्स अब तुम क्या चाहते हो, तुम बैकएंड को बोल रहे हो कि भैया मैं कुछ डेटा आपको दे रहा हूं, दिस इज आवर पेलोड, प्लीज गो एंड सेव इट इन योर डेटाबेस, प्लीज गो एंड सेव इट इन योर डेटाबेस। अब जैसे ये बैकएंड के पास रिक्वेस्ट आएगा तो जो पूरा लॉजिक होता है कि क्या इसको सेव करना चाहिए, रिक्वेस्ट इसने देखा कंट्रोलर ने कि भैया ये चलो ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, इट मींस वी हैव टू सेव दिस डेटा इनसाइड आवर डेटाबेस, सो दैट डिसीजन इज मेकिंग बाय व्हाट, योर कंट्रोलर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. And third thing is view. And view is something that compiles and renders into plain HTML. It means what? After this logical things, अब क्या होगा, ये जाके सेव हो जाएगा। जैसे सेव होगा कंट्रोलर के पास एक मैसेज आ जाएगा कि भैया आपका ये जो डेटा था ये हमने सेव कर लिया अपने डेटाबेस में। अब ये कंट्रोलर क्या करेगा, ये जो रिस्पॉन्स इसके पास आएगा, इस रिस्पॉन्स को क्या करेगा, इस रिस्पॉन्स को क्या करेगा, फ्रंट एंड वाले के पास भेज देगा। सो व्यू इज हियर। अगर आप मोनस्टैक प्रोजेक्ट की बात करते हो तो व्यू इज फॉर व्हाट, फॉर दिस रिएक्ट एप्लीकेशन। मतलब जो भी रिस्पॉन्स आएगा कंट्रोलर वो किसको दे देगा, कंट्रोलर के पास जब रिक्वेस्ट आया उसने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया और जो भी काम हुआ उसके बाद कंट्रोलर के पास क्या आ गया होगा, एक रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स से ये किसको भेज देता है, ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन को। यहां ये देखो ये रिस्पॉन्स आया ना, so that response is coming from what, your backend controller. Is it clear guys? Yes, sir. अरे कुछ तो बोलो। यस सर, क्लियर सर। थैंक्स। ओके तो गाइस ऊपर से तो नहीं जा रहा है, नहीं सर। मेरे को लगता है कि यार चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब हम कोड में आते हैं यार, बहुत बहुत कहानी बना ली है। सो अब यहां तक हमें समझ में आ गया कि वी आर गोइंग टू फॉलो आवर एमबीसी पैटर्न, वेयर वी आर गोइंग टू make our models, we are going to make our controllers, and there are some sub components between this model and controller, so we are going to build these also. And after that we are going to send the response to what, for our React application, so React application can populate accordingly. Is it clear? Okay, so first thing is what, in e-commerce we have to create our node server. What we have to create? We have to create our node server. So okay, so let's start with, so I'm going to create full stack e-commerce. चलो ये अब फोल्डर क्रिएट हो गया है, बड़ा लंबा सफर है, सो आई होप तुम लोग बीच में डिस्ट्रॉय नहीं होगे है ना। चलो Yes, sir. ठीक है। सो अभी हमारा फोल्डर एम्प्टी है, तो यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच। सो माय फर्स्ट गोल इज टू क्रिएट अ नोड सर्वर फॉर आवर बैकएंड। सो आई एम गोइंग टू like create
inside this, I'm going to create, okay, I'm going to open this CMD कोड. इसके अंदर हमारा रिएक्ट भी होगा, हमारा बैकएंड भी होगा, हमारा डेटाबेस भी होगा, सब कुछ होगा. तो यस, जितना भी कोड हो वो रिवाइज करना, कोड करके देखना, जब तक करके नहीं देखोगे कुछ नहीं होना है. ठीक है. So I'm going to create a 2 folder inside this full stack e-commerce. Okay, firstly I'm going to open my terminal here. And now I'm going to create first backend, and second is what? Front end. Front end. Okay, sorry. Okay. Front end. Okay, yeah. ठीक है. So I'm inside our full stack. So what I'm going to do, I'm going to install a package.json file inside this full stack e-commerce, not inside any backend or front end. This is a global package.json. So I'm going to install what npm init -y. So it creates us a package.json for us. .json file has been installed here. And we have a full stack e-commerce where version is 1.0.0 and there's some script file inside it. Yes? So कैसे step हो गया? Yeah. आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, screen is visible? Yes, sir. Okay. So yes, we have created it. And now we are going to install a 2 packages, 2 or 3 packages. And first is, so I'm going to install npm I, and first package is what? Express.js. So npm I express. So it gives you an environment for writing your APIs or backend code inside the Express using the Express. Is it clear? So Express is a node package which is in our npm module. So I'm going to install it. अब तो Express समझ में आ रहा है ना? Express is what? A framework of to Node.js. build a. Node.js. Okay, so yes, in our dependency array, we have a Express is installed. So second is I'm going to install is our .env. And what is this .env? So this env, this .env helps you to like to save the environmental variables which you are going to use in our local environment or in your production environment. So what is the production environment? So when you are going to deploy your code base on any any domain, then this .env package is very important. Is it clear? क्योंकि अभी हम लोकली बिल्ड करते हैं तो अभी हमारा यूआरएल डिफरेंट होता है. जब आप उसको क्या करते हो, लाइव करते हो, तो लाइव करने के बाद क्या होता है, आपका यूआरएल तो लोकल होस्ट 3000 या 8000 नहीं रहेगा ना, वहां पे आपका यूआरएल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. समझ रहे हो? Yes, sir. सर्वर का Yes, sir. URL. तो जब यूआरएल चेंज हो जाएगा तो दैट .env पैकेज हेल्प्स यू टू लाइक व्हाट टू डिफाइन इज इट अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और इट इज अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. इज इट क्लियर? Yes, sir. So I'm going to install this .env. सर एक बार फिर से बताना, एक्चुअली नहीं समझा मुझे.
समझ क्या समझा, तुमने क्या समझा ये बताओ। मतलब अभी जो आपने बोला ना, जो एनपीएम का डीओटीएनवी का, तो एक बार फिर से बताना इंस्टॉलेशन के टाइम पे। Okay, so .env is something, it helps you like you have a different environment. अभी आप जो काम करते हो, अगर आप रिएक्ट एप्लीकेशन पे काम किए होंगे तो हम किस पे सर्व करते थे रिएक्ट एनवायरनमेंट को, रिएक्ट एप्लीकेशन को, लोकल होस्ट 3000, है ना। बट जब आप इसको लाइव करते हो तो इसका यूआरएल यही थोड़ी रह जाता है, यूआरएल क्या होता है, चेंज हो जाएगा, है ना। सो .env is a package which cares about that what the environmental variables, is it a development environment or a production environment, whatever the environment it is, your .env package what it decides, is it a डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, कि किस एनवायरनमेंट में तुम हो। अगर तुम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हो तो वो यूआरएल चेंज कर देगा, अगर आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हो तो वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को गेट करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके जब सर। आप लाइव करोगे तो यूआरएल चेंज हो जाएगा ना, तो वो तुम्हारा .env केयर करता है इसकी सारी केयर, ठीक है। सर्वर का यूआरएल चेंज हो जाता है, सर्वर अभी आपका जो भी आप सर्वर जहां क्रिएट करोगे उसका भी लोकल यूआरएल होगा, बट जब आप उसको लाइव करोगे तो उसकी यूआरएल चेंज हो जाएगी। तो ये .env वो चीजें आपको हेल्प करेगा उसके एनवायरमेंटल सेटअप करने में, ठीक है। ओके, सो दीज टू पैकेजेस इज ओके फॉर नाउ, एंड आगे हमें जो भी डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल करेंगे। सो आई एम गोइंग टू मेक टू अनदर फाइल्स हियर. First is .env, and this .env is for what? To storing your variables which you are going to use. So I'm going to use a port 8000 for creating our what? Server. So when I call this port, it gives you what? This 8000. Okay, so in front end applications we know that we have something called what? Window. विंडो ऑब्जेक्ट ग्लोबल मिलता था, Yes, sir. विंडो डॉट समथिंग, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट पढ़े थे ना हम। तो बैकएंड में क्या होता है कि वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रोसेस। सो जैसे आपको विंडो वहां ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही बैकएंड में प्रोसेस इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, इसकी बातें करेंगे आगे। सो हमने अपनी कोड डिफाइन कर दिया, बस एक .env बना के कि हम यहाँ पे वो वेरिएबल्स रखेंगे जो हम यूज कर रहे होंगे। और .env क्या होगा, ये ग्लोबली आपके हर फाइल में ये अगर आप डायरेक्टली पोर्ट एक्सेस करना चाहोगे तो आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। इज इट क्लियर? करके देखेंगे आगे, अभी के लिए .env को ऐसे रहने दो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर फाइल विच इज अ git ignore। क्या करने जा रहे हैं? Good to know. So git ignore is starting with what? Git ignore, yeah. Now I'm going to ignore our node modules. And second is what? .env. अब ये जो env है ये हमारे लोकल डेवलपमेंट के लिए है, तो हम ये env भी अपने प्रोडक्शन मतलब गिटहब पे पुश नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so now our first goal is to create a server for us. क्या करना है हमें? हमें सर्वर क्रिएट करना है। So what we are going to do is that for creating a node server, firstly we have to what? We have to make a file .js, ये हम बाहर रखें, उसके बाद हमारा सारा कोड किसके अंदर चला जाएगा? Sir, बैंक stuck है आपकी स्क्रीन, सॉरी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओके, यस, बताना यार विजिबल हो तो। इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. सो व्हाट आई वांट टू से कि मैंने एक app.js बनाया यहाँ पे। अब app.js is a main file for the backend application. So here we are going to create our what?
a server, a node server, to serve our backend code. Is it clear? Yes, sir. जैसे अब backend server create कैसे करना है? So first thing we have to import a express. So I'm going to import express from, ये syntax से आप लोग familiar हैं, from express. Is it clear? Yes, sir. Okay. ठीक है, express हमारा आ गया. Now I'm going to make a variable which is called application, means app, and now this app is calling this express server. So here we have something called this. So inside this app, what it means, you are going to call this express package. Is it clear? ये express क्या है? आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो और जो भी एक्सप्रेस रिटर्न कर रहा है वो आप किसको कहाँ स्टोर कर रहे हो? ऑन दैट ऐप. थोड़ा सा ओके, दूर हो गया था ना आप लोग से 10-15 मिनट के लिए. अरे घंटा. जैसे जिसके साथ दुख शेयर करके वो गया. भाई म्यूट कर दिया, कौन है? ओके, सो नाउ इट इज ओके. या, so what you have to here, you have created an application and you have called this express. So whatever this function returns, it is saved in this app, right? And now we are going to like you can do something like छोड़ो, हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल सा एक सर्वर क्रिएट करके चेक करते हैं कि हमारा सर्वर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज दिस ऐप, एंड नाउ with the help of this app, inside this app we have a different methods. And now देखो, हम अभी सिंगल फर्स्ट एपीआई बना रहे हैं, एक बेसिक एपीआई. इसका कोई काम नहीं है, बस सीखने के लिए कि ये सर्वर क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारे लिए. So what it means, this app have different what methods like get, post, put, patch, delete. So I'm going to call a get method. And now here inside this get method, first thing is what we have to pass a URL. What we have to pass? We have to pass a URL. And URL is what? A single slash. It means what? A single slash means कि जो भी जैसे लोकल होस्ट 3000 है, अगर आप स्लैश दोगे तो वो उसी पोर्ट पे स्लैश देगा. अगर इसके आगे आप कुछ लगा सकते हो तो आप भी लगा भी दो. इट मेक सेंस. होम पेज. हाँ, तो मैंने अभी सिंगल स्लैश कर दिया. इट मीन्स कि व्हाटएवर यू आर गोइंग टू सर्व द यूआरएल, उस यूआरएल पे ये रिडायरेक्ट कर देगा. ओके, बिफोर डूइंग दिस आई एम गोइंग टू इंपोर्ट वन मोर वेरिएबल, वन मोर थिंग, एंड दिस इज व्हाट? .env. हमने .env पैकेज इंस्टॉल करा है ना package.json में. This is .env. So I'm going to import this .env from what? .env package. Clear है? ठीक है. And now अब देखना, after that I'm going to call this .env. So this .env take cares what? All the environmental variable. So how can it take cares? So we have to call the config method which is inside this .env package. So .env.config, what it do? .env.config, like it cares about whatever the environmental variable it is, it takes that environmental variable and processes accordingly. Something like we are going to use this port 8000, and here we have a development environment. So the APIs are served on that URL. But suppose if it is any production environment and the production is something like HTTPS any URL www dot backend .com. तो अभी तो आप 8000 पे अपनी पूरी पेज टेस्ट करोगे, बना के यूज करोगे, बट जब ये प्रोडक्शन पे जाएगा तो मैं चाहता हूं कि जैसे ये प्रोडक्शन पे जाए, मींस लाइव हो, तो हमारी यूआरएल चेंज हो जाए. सो दिस, अब ये 8000 की जगह क्या यूज हो? दिस यूआरएल. समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? जैसे अभी
अगर यहाँ पे बैकएंड पे हिट करते हो तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, हेडर में कहाँ पास कर रहे हो, लोकल होस्ट 8000, बट जब ये लाइव हो जाएगा तो यू हैव टू चेंज दिस यूआरएल. So this .env variable take cares of that production or any local environment variables. So you have to call this function first to take care of ki what it is, like it is a production environment or a local environment. ठीक है. So now I'm going to use app.get. This is a method. We have a different method like get, post, put, and attach. And as a first argument inside it, we have to pass what? A URL, a API URL. And here we have a second function, which is a callback function. So inside a callback function, we have two things, request and what? Response. So this callback function take two arguments, a request and a response. And it returns, now it returns something like response dot send hello from node server. What it means, when I going to hit this API, this URL, then it gives you some response, and this response is what? Hello from node server. Is it clear? Okay. अब देखना, अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे अपनी पोर्ट डिफाइन करनी पड़ेगी कि भैया हमें किस पोर्ट पे अपने आप को सर्व करना है. सो व्हाट वी कैन डू, const port is equals to, and to access this env variables, we have to use a global object inside a backend, which is what? A process. फ्रंट एंड में एक विंडो आता है ऑब्जेक्ट, ऐसे बैकएंड में प्रोसेस होता है. सो process dot, if you have to access this environmental dot env file, you have to use this process dot env. अगर आपको ये डॉट env फाइल एक्सेस करनी है, मींस यहाँ तो आपने कुछ डिफाइन नहीं किया है ना, कॉन्स्टलेट या वेरिएबल, आपको ये पोर्ट एक्सेस करना है. सो व्हाट यू कैन डू, you can use this process dot env variable, and inside this env we have different things. So we have what we have? We have a port. So I'm going to use this port. So anything inside this env variable, something like xyz is equals to this string. So you can access this xyz inside any files with what? process.env.xyz. Clear है? ठीक है. So I'm going to create our server. I'm going to define our port. So here our port is what? 8000. process.env.port. अगर ये पोर्ट होगा तो वो, अदरवाइज अगर वहां कोई पोर्ट मिलता नहीं है तो 8000 ले लो. इट मीन्स वॉट कि इन दोनों में से कोई भी, अगर process.env.port मिल जाएगा तो पोर्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. अगर मान लो कोई एनवायरमेंटल वेरिएबल मिस कर जाए तो उसके लिए हमारी पूरी सर्वर तो आप बंद नहीं कर दोगे, तो यू आर गोइंग टू गिव व्हाट? दिस 8000. इज इट क्लियर? यस सर. ओके. एंड नाउ अब आपने क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, आपने डॉट एनवी कॉन्फ़िगर कर ली, आपने एक्सप्रेस को कॉल कर लिया, और एक्सप्रेस के अंदर यहाँ आपने अपनी लॉजिक लिखी है कि भैया दिस इज आवर व्हाट? URL. When anyone is hitting this URL from front end or from a client side, means something like this, when you click on that add button, this URL has been hidden. So what it means, when any client browser hit any API, then if this is the URL, then you have to take this call, you have to take this request, and you have to give this response. And तो ये तो रिस्पॉन्स हो गया. अब ये है हमारा पोर्ट जहां पे हमारी यूआरएल सर्व हो रही है. आफ्टर दैट द थर्ड थिंग, सॉरी, दो चीजें तो हो गई. अब तीसरा एंड लास्ट थिंग क्या करना होता है, यू हैव टू लिसन दिस व्हाट? यू हैव टू लिसन दिस API. So what you can do, so in app.listen, first you have to pass a port number. So this is your port. So
it takes this port as a first argument, and then you have one callback function, and this callback function giving you console. So console.log, I'm giving server is running on port, and you can use what? This literal operators, which is what a JavaScript syntax, है ना, on that port. तो अगर इसको पोर्ट मिलेगा तो ये हमें कंसोल दिखने लगेगा, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट दिस. ओके, लेट मी चेक इफ इट वर्क फाइन और नॉट. सो हमने यहाँ पे 3 चीजें करा है. हमने पहले, अब ये सारे लॉजिक्स आपको एनवीसी के थ्रू मैं बताऊंगा, तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा. अभी आपने कुछ नहीं किया, आपने एक एक्सप्रेस से ऐप निकाला. अब ये एक्सप्रेस के अंदर जो भी चीजें हैं वो ऐप के अंदर आ गई. अगर आप यहाँ कंसोल करोगे आपको, तो आपको मिल जाएगा पूरे एक्सप्रेस की मॉड्यूल. उसके बाद आपने ऐप से मेथड निकाला. ये रिक्वेस्ट कोई फ्रंट एंड से करे तो आपको रिस्पॉन्स ये सेंड करना है, और हमारा पोर्ट ये है, और हमने पोर्ट को लिसन कर दिया. अगर आप ये पोर्ट लिसन बंद कर दोगे तो आपका सर्वर चलेगा ही नहीं, बिकॉज उसको कोई पोर्ट पे आपने वो सर्वर चलाया नहीं. ये आपको सर्वर हेल्प चलाने में हेल्प करता है. दिस लाइन ऑफ कोड is for what? For defining your port, and this is for what? To getting a request from what? Front end application. Is it clear? Okay, so now I'm going to start my server. So I'm going to start node app.js. Okay, sorry. 7, looking for funding. Okay, full stack e-commerce. अरे कुछ करा है क्या? Node app cannot import outside a module. Express. So we can do one thing. Cannot use import statement outside a module. So ठीक है. मैं क्या करता हूँ, import express from express. Okay. env.config, and now we can do this. अगर इससे भी निकलता है ठीक है, कोई बात नहीं. So we can do one thing. We can use a require syntax. Const express is equal to, this is a second way to write import statement. You can use require, and you can pass this express, and now you can use this express. तो अब देखते हैं node app. ठीक है, फिर भी नहीं लिया, तो हमारा सिंटैक्स सही है. क्या प्रॉब्लम है? सर इधर 2 इंपोर्ट थे ना, दोनों को अगर चेंज कर देंगे तो चल जाएगा शायद. नहीं यार, ऐसा तो इंपोर्ट स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नहीं है यार, ये तो जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट. import app.listen. TSConfig तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं. मॉड्यूल type module inside this package.
नेम वर्जन मेन, अच्छा 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 अच्छा, एक्चुअली द मेन फाइल इज index.js एंड आवर फाइल इज व्हाट, द app.js। दिख रहा है हमने क्या बनाया? तो आई थिंक maybe it works. Okay, node main find module. Okay, node app.js, app.js हमारे package.json यहीं पे तो है। import what it means, no type, मैं टाइप डाल के देख लेता हूँ एक बार। package.json के अंदर maybe it works, yeah it works। एक्चुअली एक इशू था हमारे पैकेज.json में, हमने टाइप नहीं डाला था तो मॉड्यूल वो फाइंड नहीं कर पा रहा था इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो इनसाइड द पैकेज.json वी हैव पेस्टेड दिस टाइप, सो टाइप इज मॉड्यूल। तो अब इसको मॉड्यूल मिल रहा है ना। तो अब देखो जब यह मॉड्यूल मिला तो इट गिव्स यू कंसोल दैट सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। इज इट क्लियर? तो अब आपके पास सर्वर क्रिएट हो गया, you have successfully created a node server to handle a backend code. Is it clear? Yes, sir. So अगर आप ये लिसन नहीं कराओगे तो सर्वर आपका चलेगा नहीं। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, दिस इज फॉर टू लिसनिंग आर सर्वर। आपने सर्वर को इंपोर्ट तो कर लिया, ऐप को लिख के तो आ गया, बट जब तक आप ऐप को किसी पोर्ट पे लिसन नहीं कराओगे तब तक आपका सर्वर नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? Okay, so what it means, if I'm going and hit this URL and now server port किस port पे चल रहा है? This 8000. So when I'm going to hit this localhost 8000, now hit the enter. Yes, hello from node server. So yes, hello from node server. अगर आप इसकी URL चेंज कर दो, अगर अब आप हिट करोगे, अब देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे, अब देखो एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि जब आप ये यूआरएल है, दिस इज योर यूआरएल, सो व्हेन यू आर गो एंड हिट दिस यूआरएल, सॉरी नाम भी तो अजीब सा रखा है मैंने, चलो मैं ना ये हटा के एपीआई लिख देता हूँ। तो अगर अब मैं एपीआई करूंगा तो कैन नॉट गेट एपीआई। अब इसके लिए मुझे फिर से सर्वर को क्लोज करना पड़ेगा और फिर से सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। Now, when I'm going to hit this, press yes, hello from node server. समझ पा रहे हो? अब आप इसके आगे कुछ लगाओगे तो ये वर्क नहीं करेगा। आप बेशक कुछ भी कर दो क्योंकि इसको ये पाथ नहीं मिल रहा है। अगर मैं पोर्ट बंद भी कर दूं और मैं फिर से चला दूं तो भी मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो कैन नॉट गेट दिस। व्हाई? बिकॉज दिस यूआरएल इज नॉट डिफाइंड इनसाइड व्हाट, इनसाइड योर लॉजिक। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नाइस। सो अब देखो, अब एक प्रॉब्लम है कि भैया अब आपको बार बार सर्वर क्लोज करना पड़ता है। अब मैं एपीआई हिट करूंगा तो एपीआई तो हिट हो गई, बट अब मैं अगर इसके अंदर कुछ चेंज करूंगा, हेलो फ्रॉम सर्वर अपडेटेड, और मैं अगर रिफ्रेश भी करता हूं कि ये डेटा मुझे नहीं मिल रहा है, इसके लिए फिर से मुझे सर्वर क्लोज करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इट इज लाइक व्हाट, इट इज टिपिकल कि आप बार बार सर्वर क्लोज करो एक रिक्वेस्ट को देखने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा पैकेज आता है जिसको हम बोलते हैं नोडमॉन। व्हाट? Nodemon. तो npmi nodemon, आई एम गोइंग टू इंस्टॉल दिस nodemon पैकेज। It is going to install. Yes, now it is installed, and now I'm going to change our script. So inside our script, there is what? A test. So I'm going to write original block.
Yes. So I'm going to change this script, and what we are going to change, I'm going to use this start, and now I'm going to change this to what? Node-mon. And what is our parent file? app.ts. So if I'm going to start node-mon, yes, I think our app is crashed. So why it is so? Uh, mm, 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 mm. If I'm going to use npm start, yes, okay, वीडियो फ्रीज हो गया, वो आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया सर। अभी चल रहा है, यस सर, अब विजिबल है। okay. So we have changed the nodemon app.js, app start भी हुआ, but problem create कर रहा है कुछ, and क्या problem है? nodemon app npm start, ये nodemon भी किया मैंने, तो ठीक है, okay, going to close it. And what we can do here, node npm स्टार्ट नहीं था ना, यहाँ पे टेस्ट था ना, तो टेस्ट ही कर देते हैं, npm टेस्ट। ये कहीं से एरर एमिट हो रहा है यार, बैकएंड के एरर्स आते हैं ना, आते हैं छोटे छोटे, तो what it means, okay, give me a second, move more, all, ठीक है, node server, node इसको मिला नहीं, ये क्या कर दिया ना, कहाँ फट रहा है देखना, एड्रेस ऑलरेडी यूज्ड इन 8000, अरे यार इतना बकवास सा है,
एरर पता है क्या था? ये पढ़ो गाइस, देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Address already in use in 8000 8000 में एड्रेस ऑलरेडी यूज था, दैट्स वाई एरर आ रहा था। मुझे लगा है कुछ नोडमैन के उसमें इशू है, अब ये चल जाना चाहिए यार। यस, नाउ योर सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 8000। ठीक है, तो आपने नोडमॉन से, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं ये चलाता हूँ npm नोड ऐप डॉट, और जो npm टेस्ट भी चलाऊंगा तो भी चलेगा, आई थिंक चलना तो चाहिए। यस, दिख रहा है? आपने स्क्रिप्ट में टेस्ट कर दिया और यहाँ नोडमॉन डाल दिया। नोडमॉन के साथ आपने फर्स्ट फाइल क्या पास करा है? app.js, so it serves this app.js and yes, server is running on port 8000. Is it clear? Yes, sir. So first thing that has been done, like you have created your own server and you can like build different APIs on that server, which is what 8000. ठीक है, so अब हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, and what next we have to do here is you are going to create a MongoDB account to use a Mongo database. Is it clear? ठीक है, अब आपका फर्स्ट काम हो चुका है। अगर आप नोटपैड पे आओगे तो फर्स्ट सेक्शन में हमने क्या अचीव कर लिया अभी तक? सर्वर इंस्टॉल हो गया सर। सर्वर हैज बीन क्रिएटेड। देखो पॉइंट वाइज करोगे ना तो फिर ये हमारा क्या हो गया? डन हो गया फर्स्ट सेक्शन में। अब सेकंड, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू? Yes. We have utilized Express server for creating our first API. ठीक है, हमने अपने फर्स्ट API को क्रिएट कर लिया है। दिस इज आवर फर्स्ट API, आप देख सकते हो। ऐसे ही हमारी API दूसरी भी बनेगी, बस URL चेंज होंगे। ठीक है, अब फाइल्स MVC में फॉलो करेंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to create account on MongoDB Atlas for our database instance and उसके बाद क्या करना है हमें? Then going to connect our MongoDB cluster to our backend application. ठीक है भाई, समझ रहे हो सब? तो Yes, अभी sir. हमारा दो काम है। हमने सर्वर क्रिएट कर लिया, हम अब MongoDB Atlas पे अपनी अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद अपने MongoDB क्लस्टर को बैकएंड एप्लीकेशन से क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। तो मैं एक डॉक तुम लोग के साथ भी शेयर कर दूंगा। इट हेल्प्स यू अ लॉट टू व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अकाउंट और यू आर गोइंग टू मेक अ क्लस्टर। आई एम गोइंग टू लाइक, मैं अभी दिखाऊंगा भी, बट एक डॉक मैं शेयर कर दूंगा। वो डॉक मैं खोल लेता हूँ। ये स्टॉप कर देते हैं, सॉरी यार। ठीक है, स्टॉप करते हैं ये सर्वर। एंड नाउ वेयर आर कीड़ा? कहीं दिख रहा है तुम्हें ये कीड़ा? हाँ, so inside this कीड़ा we have something, e-commerce project. Yes, MongoDB working flow. So I'm going to open this document. Yes, so अरे यार ऐसे मत करो यार, मैंने सेव नहीं करा था क्या यार? ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ, धन्यवाद। तो ठीक है, तो वी हैव टू साइन अप विथ MongoDB Atlas टू यूज अ MongoDB। सो बेसिकली आप MongoDB को आप लोकली भी यूज कर सकते हो। और MongoDB का एक बेनिफिट क्या है,
before understanding like MongoDB is a database, so which is generally used with a Node.js or Express.js or like JavaScript backend applications. So फर्स्टली इट इज अ क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर, और आप ये बोल सकते हो कि आप लोकली भी MongoDB यूज कर सकते हो और क्लाउड से भी यूज कर सकते हो. तो क्या होगा कि कोई भी चीजें अगर आप डालोगे MongoDB यूज करोगे तो वो आपकी क्लाउड पे भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा. मीन्स योर MongoDB URL is accessed from globally outside from any like any part of the world. आप कहीं से भी अपने MongoDB को, अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाओगे अगर वो क्लाउड पे है. जैसे अगर आपकी गूगल फोटोज हैं तो अगर आप यूएस में भी जाओगे तो गूगल फोटोज को एक्सेस कर पाओगे ना. सिमिलरली यू कैन एक्सेस योर MongoDB अकाउंट फ्रॉम एनी साइड फ्रॉम दी वर्ल्ड. लाइक आपको उसके लिए आपके पास अपना सिस्टम होना जरूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है. आप कहीं से भी साइन इन करके अपने MongoDB अकाउंट को चेक कर सकते हो. क्लियर है? Yes. So, Yes, sir. first thing is what you are going to visit this URL. So basically, I have already created it, but I'm going to use my another account, different account. So okay. ये खुल क्यों नहीं रहा? Okay, so give me a second. Yes, I'm going to switch my account. Okay, I'm going to use this other Cgida. So I'm going to open this URL. Yes. So yeah. So this is a MongoDB website where database deploy a multi-cloud database. So MongoDB, अगर आप देखोगे तो MongoDB Atlas is an integrated suite of data service centered around a cloud database designed to accelerate and simplify how you build with data. Build faster and build smarter with a developer data platform that helps solve your data challenges. So this is a replacement of MySQL or SQL. It totally depends on you what you are going to use or what your client is requiring. What's your client requirement? Like many of requirement is from MySQL, many of requirement is from like PostSQL, and many is from MongoDB. So MongoDB भी database है जो कि cloud architecture follow करता है, जो मैंने बता दिया. So you can create an account from by clicking that try free button. So okay, so I'm going to click on start free, and then step 3 is complete the form with email, name, password, accept terms and services, and hit the button that says get started free. Okay, so I'm going to create another account. So आप लोग भी create कर सकते हो साथ में parallelly if you want. Other Cgida www.cgida.com, and what is the like okay, so what is our email? Adarsh .ekida@gmail.com, right? And Adarsh@123. Okay, I'm going to create my account. Okay, I'm going to sign up with my Google account. It is more easy. Yeah, yes, Adarsh Ekida.
I'm going to accept the privacy policy and submit it. Yes. Yeah. So yes, use it gives us some welcome message. Use your account to deploy a cloud database, and now it is going to redirect you on that atlas. So I have to like fix what is your goal today. So explore and what I can build a new application or a learn database. What type of application you are going to build? I'm going to build what? Okay, I'm just exploring. What is your preferred language? So JavaScript, you can use any of them, Python, Java, C#, PHP. You can like connect a PHP application or a Python application or a C# application with what? A MongoDB, and you can use this MongoDB for your database. And now I'm going to click this finish button, and now your cluster is ready, your template is ready. Yes. So yeah, and here we have deployed your database, and you have three options. First is $0.08 per hour, second is this, and third is free. So I'm going to use this free option. And now inside a document, then you have to new page, ठीक है, build your cluster, ठीक है. तो अभी अब यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ पे रीजन है, तो ये डिफरेंट रीजंस हैं, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो. देयर हैव अफ्रीका रीजंस, मिडल ईस्ट रीजंस, नॉर्थ अमेरिका. सो इट इज ओके, नॉर्थ अमेरिका ही सही है. और अभी हमारे पास क्लस्टर एक भी नहीं है, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट विद अ क्लस्टर 0. एंड प्रोवाइडर कौन सा है? AWS है. मींस ये जो क्लाउड का प्रोवाइडर है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें? AWS प्रोवाइड कर रहा है. नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माय अकाउंट, क्रिएट माय फर्स्ट क्लस्टर. ओके, सो अब यहां तक तो हो गया है. अब मैं एक बार यूजर नेम सेव कर लेता हूं, नहीं तो ये बाद में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, मिलता नहीं है यूजर नेम. नोटपैड, और मेरा जो यूजर नेम है MongoDB यूजर नेम इज व्हाट, लिख देता हूँ, फॉरी कीड़ा. सॉरी, व्हाट इज माय यूजर नेम? This is my username, and password is what? This. So password is this, and now I'm going to create my user. So this is my local environment where you like to connect from, cloud environment or a local environment. IP access is can be modified at any time. Use this configure network. Okay, ठीक है. So I'm going to create my user. So yes, I'm going to create. Yes, it is created. Now my username is what? This other Kida, and authentication type is password, and I have saved my password. So where it is needed, I am going to paste this password. So third thing is where you are like to connect from. So going again on my documentation. So here inside us, step 8, whitelist our IP address. So what we are going to use? We are going to use this IP address. Then you will see the following window pop up. तो मैं ये IP address use करूँगा. तो अभी के लिए add my current IP address or something like, ठीक है, मैं current IP address अपना, चलो मैं add कर लेता हूँ IP address. नहीं है, ठीक है, तो इसका तो कोई बात नहीं है. IP एड्रेस पहले से क्रिएटेड है, IP एक्सेस लिस्ट है हमारे पास, तो मैं फिनिश कर देता हूँ. तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सेटिंग अप एक्सेस रूल्स. मतलब हमने अपनी एक्सेस वाली सारी चीजें सेट कर ली हैं, अपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, आपने यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, आपने सब कुछ क्रिएट कर लिया. अब नाउ मैं अपने डेटाबेस में जा रहा हूँ. तो इट इज टू यूजर फ्रेंडली. तो ठीक है, हमारे पास अब डेटाबेस यहाँ पे बन के आ गया है for project 0, and we have database deployments. So what it means कि we have to create a cluster for every project. हमें क्या करना पड़ेगा? क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा. तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे आओगे तो देखो यहाँ पे स्टेप 4 में क्या था,
आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया, देन यू विल टेक इन टू न्यू पेज। चलो ठीक है, बिल्ड माई फर्स्ट क्लस्टर, एंड स्टेप 5 में towards at the end of the page you will be cluster name row, click on that to enter the name for your new cluster database. So अगर आप यहाँ पे आओगे तो you have all the clusters. अगर आप पूरे क्लस्टर्स पे आओगे तो यू हैव अ सिंगल वन क्लस्टर, है ना, दिख रहा है? यस सर। तो देयर आर, अगर मल्टीपल क्लस्टर्स होंगे तो मल्टीपल जीरो, ठीक है। हमने डेटाबेस यूजर नेम क्रिएट कर लिया है, हमने आईपी वाइट लिस्ट कर लिया है, और अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपनी यूआरएल को कनेक्ट करना है। तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट कनेक्ट बटन। तो यस, so where you are going to connect? So I am going to connect my application with what? Get connection URL। इसके पहले हमारे पास क्या था? और ठीक है, लेफ्ट साइड बार कनेक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, चलो ठीक है। तो मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ कनेक्ट योर एप्लीकेशन। सो मैं अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। सो दिस इज माई URL। व्हाट इज दिस? दिस इज माई URL, और यहाँ लिखा हुआ है कि ये URL मुझे Mongo URL कॉपी करना है। सो आई एम गोइंग टू सेव दिस URL in our what? In our application. So what we can do here, I'm going to save this inside .env. So I'm going to give them Mongo Mongo URI. दिस Mongo URI, आप कोई भी नेम दे सकते हो, मैं ये सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है आपको कि रिप्लेस पासवर्ड विद द पासवर्ड ऑफ फॉर द अदर सी कीड़ा यूजर, है ना। मुझे पासवर्ड किससे रिप्लेस करना है? अपने पासवर्ड से। अब देखो यहाँ पे, यहाँ आपको दिख रहा है ना क्लस्टर 0, दिख रहा है? यस सर। तो अब मान लो कि तुम्हारे पास डिफरेंट क्लस्टर्स है, तो उनकी URL आ जाएंगी। अगर आपके पास MongoDB के अंदर 10 डिफरेंट क्लस्टर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आपने बनाया है, तो each cluster is responsible for your each project. Is it clear? तो यहाँ क्लस्टर्स, एक क्लस्टर ओनली एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही क्लस्टर बनेगा। एग्जैक्टली, या ओके। आप मल्टीपल क्लस्टर्स बना के आप उसकी URL गेट कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है, उस पर क्लिक करके, ठीक है। So now you have to change this password with what? Your MongoDB password. So we have saved this password and here it is our password. So I'm going to change our password with that. So here we have to replace this with our original password. It is okay? ठीक है, बढ़िया। मैंने अपनी क्लस्टर तो क्रिएट कर लिया है, अच्छी बात है, एंड कनेक्ट हो गया। सो आई एम गोइंग टू क्लोज इट। सर थोड़ा And ये here- बताइए इन Yeah. सिंपल वे में क्लस्टर किसको कहेंगे, मतलब यस, देखो बेसिकली क्या होता है ना कि क्लस्टर इज समथिंग, मान लो कि एक फोल्डर है MongoDB, ये प्रोजेक्ट 0 है, ठीक है। अब क्लस्टर के अंदर तुम्हारे सारे जो माई सीक्वल में मैंने डेटाबेस दिखाया था, समथिंग Yes, लाइक जब मैं जैम सर्वर पे गया था तो मैं प्रोजेक्ट के अंदर आया था, तो यू हैव वन समथिंग लाइक, मैं रुक जाओ तो मैं फिर से दिखाई देता हूँ। जैम के अंदर जब तुम गए थे तो देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स, देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स। अगर आप जैम के अंदर जाओगे, मैं दिखाता हूँ माई सीक्वल के अंदर कर देता हूँ, और अब मैं माई सीक्वल एडमिन में जाता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ टेबल्स, राइट। यस तो दैट इज व्हाट योर क्लस्टर। अब आपके माई सीक्वल में यहाँ कितने प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं? देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, every project have their own schemas, own tables, right? So here this cluster is what? This क्लस्टर मींस मतलब सर डेटाबेस लाइक इसको बोल सकते हैं क्या इसमें? exactly, yes, you can say कि what are you are going to use। अब इस क्लस्टर के अंदर डिफरेंट क्या होंगे? तुम्हारे टेबल्स होंगे, और MongoDB में टेबल्स नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो there are lot of documents, something like your user document, your post document, your comment document, or something like
कि तुम्हारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग की डॉक्यूमेंट होगी, सब कुछ होगा किसके अंदर, उस क्लस्टर के अंदर जो आप यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में। ओके Got यस it? सर, यस सर। ठीक है, तो अब आपने क्लस्टर तो क्रिएट कर लिया है, अच्छी बात है, आपने कनेक्ट भी कर लिया है। अब देखो ये कनेक्ट भी हो चुका है, दिख रहा है ना, यहाँ पे रीजन भी दिखा रहा है, ठीक है, किसके साथ टायर है वो दिखा रहा है, वर्जन दिखा रहा है क्लस्टर 0, ठीक है। अब आपने क्लस्टर के लिए अपने कनेक्शंस बना के आपने यूज तो कर लिया। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज दिस क्लस्टर, राइट? ओके, अब आपने MongoDB में अकाउंट क्रिएट करके सब कुछ क्लियर कर लिया है। अब आप जाओगे, आप क्या करने वाले हो, आप अपने डिफरेंट आप मोंगो, अब आपका तीसरा स्टेप क्या था यहाँ जो मैंने डिस्कस करा हुआ था कि गोइंग टू कनेक्ट योर MongoDB क्लस्टर टू आवर बैकएंड एप्लीकेशन। सो इट इज डन, आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया और डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। अब आप क्या करोगे, MongoDB क्लस्टर को किससे कनेक्ट करोगे? इट मींस यू आर गोइंग टू कनेक्ट दिस URI which is inside this environmental variable. So you are going to connect this Mongo URI to your backend एप्लीकेशन। अब इस सर्वर को आप किससे कनेक्ट कर दोगे? इस डेटाबेस से कनेक्ट कर दोगे जो आपने Mongo URI बनाया है, ठीक है गाइस? ये मोंगो यूआरआई मतलब ये जो आपने नाम दिया हुआ ये यही नाम रखना है कि चेंज भी रख देखो सकते ये हैं? दिस इज योर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अब तुम अपना नाम लिख दो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि आप मतलब एक Mongo URL को Mongo URI से आप डिफाइन करते हो। ओके, ये ऐसा नहीं है ना फिक्स ही कि यही रखना ही रखना है। हाँ, बट देखो कभी भी डेवलपमेंट करो तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है जो हमें फॉलो करना होता है कि सामने वाले डेवलपर अगर कहीं Mongo URI तुम यूज कर रहे हो तो उसको समझ में आए कि Mongo URI इट मींस कि वो Mongo URL है जो कि वहां से उसने क्लस्टर से गेट करा है। अब वहां पे तुम अपना नेम दे दोगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा ना तुम्हारे प्रोजेक्ट पे काम करेगा, भैया क्या दे दिया ये। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है जो हमें फॉलो करनी होती है, ठीक है भैया? ओके, सो गाइस गिव मी अ 1 minute यार प्लीज, ठीक? यस आशुतोष, यस बताओ। आशुतोष ओके, so my screen is visible ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so yes, I'm going to start to connect our like backend with our database. So here what we can do is I'm going to create inside our backend, I'm going to create one file which is basically what a config file. So what you're going to do, I'm going to create a config file. So config file is something which is what a connection file which connected the database to what your entire backend application. So I'm going to create it inside the backend application directory. Okay, so what we can do, ठीक है, so I'm going to create one config folder. So all the configurations is inside this config folder, and now inside this configuration folder I'm going to create db.what.js, ठीक है ना? So now what we can do here, firstly I have to install one more package inside your package.json,
and now the package is what? A mongoose. So what is this mongoose? If I'm going to scroll, what is mongoose? So you're going, what is mongoose used for? So mongoose is a Node.js based object data modeling ODM library for MongoDB. So it is it is akin to a object relational mapper ORM such as SQL, alchemy for traditional SQL databases. It means what? कि mongoose क्या करेगा? तुम्हारे MongoDB को जो तुमने क्लस्टर क्रिएट करा है इसको कनेक्ट करेगा तुम्हारे इससे एप्लीकेशन से. So what I'm going to do, I'm going to install what? Mongoose. ठीक है? Yes, sir. अच्छी बात है, mongoose भी हमारा हो गया इंस्टॉल. ठीक है, mongoose आपका इंस्टॉल हो गया. Here it is the version 7.0.3. So now you are going to inside your db.js and now you are going to import what? Mongoose from what? Mongoose library or mongoose package. ठीक है? And now you are going to use this URL, or no, you are not going to use any URL. You are going to what? Make a function and name it initdb. initdb. आप कुछ भी नाम रख देना आपके मन का है. So this is a normal JavaScript function. So I'm going to make something. So firstly, what you have to do, you have to make a connection between what? MongoDB and a backend server. So what you can do, you are going to use mongoose and it have one function which is called a connect. So mongoose.connect, and now what you have to pass? You have to pass this env. Env means what? This Mongo URI. So inside the app URI, what you have done here, if you want to use this port, so you can env dot what? Mongo URI, है ना? सही है? कोई दिक्कत है? No, sir. This connect function takes first argument as a URL of the MongoDB and second is an object. And this object have what? This object have two things. First is, I think we have what we have used, the version is 7.0.3. तो 7 में हमें इस ऑब्जेक्ट में ओके, तो मैं बता देता हूँ कि it have two things in this object. First is use new URL parser, which you have to give in true, and second is what? Use URL or no, use unified topology जो आपको देना पड़ता था पहले, ट्रू. बट नाउ अब क्या होता है कि ये कौन से वर्जन में होता था? जब हमें ये दोनों चीजों को ट्रू करना होता था जब आप यूज करते थे वर्जन लेस देन 5. बट नाउ इन वर्जन 7 it is automatically coming with the connect function. So you have to pass the empty object. पहले के वर्जन्स में हमें ये पास करना होता था, बट अब हम क्या करते हैं? empty object पास करते हैं, क्योंकि ये पहले से इसमें प्री बाय डिफॉल्ट आता है. ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. So now it is okay. And second, अब आपको क्या करना है? अब आप क्या करोगे? mongoose को mongoose डॉट कनेक्शन बना रहे हो, तो कनेक्शन को क्या करोगे? ऑन करोगे. एंड कनेक्शन ऑन करने के लिए यू हैव टू पास अ फर्स्ट आर्गुमेंट की भैया ये मुझे कंसोल में दिख जाए कनेक्टेड, एंड सेकंड इज व्हाट? अ कॉल बैक फंक्शन. सो दिस कॉल बैक फंक्शन टेक्स व्हाट? दिस इज टेक्स कि समथिंग कंसोल कनेक्टेड हो गया हमारा. अगर ये कनेक्टेड है तो हमारे पास
कंसोल में क्या आ जाए, ये चीजें ये वापस आ जाए कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड टू मोंगो डीबी। अगर ये आपके कंसोल ब्राउजर में आ जाएगा तो आप समझ जाना कि आपका मोंगो डेटाबेस क्या है, कनेक्टेड है। मींस आप क्या कर रहे हो, एक डेटाबेस कनेक्शन का फंक्शन बना रहे हो। ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, एक कनेक्शन ले रहा है कि मोंगोस को कनेक्ट करो इस यूआरएल से। अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो कंसोल में आपको ये दिख जाएगा कनेक्टेड टू अ मोंगो डेटाबेस। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। सेकंड है, इसके साथ दूसरा फंक्शन भी आता है mongoose, जो कि आपकी एरर को हैंडल करेगा। तो आई एम गोइंग टू गिव इन mongoose डॉट कनेक्शन डॉट ऑन, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। नाउ ये भी एक कॉलबैक फंक्शन ट्रिगर कर देगा। दिस इज अ कॉलबैक फंक्शन विच इज गोइंग एज अ सेकंड आर्गुमेंट ऑफ दैट mongoose dot connection dot on function. And now inside this we are going to use console dot log, and now what, error connecting when you are trying to connect with what, mongo database। ठीक है भैया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने फंक्शन तो बना लिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट and what, init what, this db। so I'm going to export this so we can use this component or we can use this file to another file। ठीक है। so now I'm going to call that connection inside our server file, it means app.js file। so what we are going to do, when I creating an instance of that express server, when we are creating, before creating the instance of that server, we are going to connect our application to what, a mongo database। समझ पा रहे हो सब? so what you can do, I'm going to use, अच्छा मैं यहाँ भी करके देखता हूँ एक बार। so I'm going to call app, okay। so init क्या है आपका, क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसको इंपोर्ट, अब देखो ये फर्स्ट फाइल है ना जो रन कर रहा है सर्वर का, समझ पा रहे हो तुम लोग? यस सर। दिस इज द फर्स्ट फाइल which is what, which is creating a server for you। so what you are going to do, you are going to connect your database, a mongo database, with what, this app.js। so this is your connection file where mongoose is going to connect with your mongo URI। so what you are going to do, you are going to import, sorry, we are going to import what क्या इंपोर्ट करना है हमें, init db इंपोर्ट करना है। तो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट init db from where, from, okay, from single slash, and this is inside our backend, and inside this backend we have a config file, okay, sorry, config, and inside config we have a db file। ठीक है। सो आई थिंक जब आप कोई फाइल कनेक्ट करते हो, ध्यान में रखना ये एरर देता है, बिकॉज यू हैव टू गिव db.js। अगर कोई आप अपनी फाइल को इंपोर्ट करते हो किसके अंदर, बैकएंड के अंदर, तो यू हैव टू गिव द प्रॉपर पाथ, सो db.js। so I'm going to call this init from here। so here after configuring the .env, I'm going to call this init function। Is it clear? so मैं यहाँ लिख देता हूँ, it is going to connect your backend application to a mongo db database। अब ये कनेक्ट हो जाएगा तभी आपका पोर्ट लिसन होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो भाई? so I'm going to start my server। so देखते हैं, node app.js, node, okay,
यार कुछ एरर आ गया क्या? अच्छा, पावर सेल पे कहीं और भी चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, यस। देखो, कनेक्टेड टू अ मोंगो डेटाबेस, दिख रहा है तुम्हें? यस सर। तो अब आपका मोंगो डेटाबेस क्या हो गया? कनेक्ट हो गया विदाउट एनी एरर। वाओ वाओ, नाइस। मुझे लग रहा था एक आध एरर तो आएगा, कुछ ना कुछ तो फेंकेगा ये, बट इसने कुछ नहीं फेंका। इसने आपके मोंगो डीबी को कनेक्ट कर दिया। जब भी जैसे जैसे ये एप्लीकेशन चला होगा, इनिट डीबी कॉल हुआ होगा, एंड इनसाइड दिस इनिट डीबी व्हाट इज कनेक्टेड टू अ मोंगो डीबी। अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो क्या मैसेज आता? ये एरर आता। सपोज आई एम गोइंग टू चेंज आर मोंगो यूआरआई, और मैं ना इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और देखता हूँ मैं मेजोरिटी में वाई हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं चेंज करके देखता हूँ कि क्या हमारा चल रहा है अभी भी। तो आई थिंक, गिव मी अ सेकेंड, क्योंकि मैंने इन्वायरमेंटल वेरिएबल में कुछ चेंज करा है, तो मुझे फिर से सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज फ्रॉम इन्वायरमेंटल वेरिएबल। अगर आप यहाँ कुछ चेंज करोगे, आपको सर्वर फिर से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई npm टेस्ट। लेट मी चेक। अच्छा, डीबी चल गया हमारा। तो अगर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, मीन्स यूआरआई भी मिल रहा है इसको, तो मेजोरिटी, तो मैं क्लस्टर 0 को 0 हटा देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि हमारा कनेक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सो npm टेस्ट, ये फिर भी कनेक्ट कर रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। सो आई एम गोइंग टू चेक कि mongoose.connect.process.env.mongo URI, और mongo URI इसको मिल भी रहा है, ये कनेक्ट भी कर रहा है। हाउ कैन बी इट पॉसिबल? जब हमने यूआरआई चेंज कर दिया तो उसको नहीं करना चाहिए। आई नो देयर इज सम इशू हियर, सो व्हाट वी कैन डू हियर, लेट मी चेक कि ओके, लेट मी चेक व्हाट mongoose dot connect returns। तो एक बार देख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, MongoDB कैच द एरर, विजुअल कनेक्शन। अच्छा 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 अच्छा, आई थिंक देयर सम इशू, एंड व्हाट इज द इशू? मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ इसको, और मुझे सॉरी, मेजोरिटी हो गया, प्लस तो 0 हो गया। हो सकता है, बिकॉज व्हाट इज द इशू हियर, कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एक बार ये कनेक्टेड है तो मुझे इसके कनेक्शन के लिए भी हैंडल करना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हैंडल इट्स कनेक्शन। अगर ये कनेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है? सो आई एम गोइंग टू यूज mongoose in if condition। आई एम गोइंग टू यूज दिस mongoose dot connections, एंड और जीरो इंडेक्स कनेक्शन एक एरे होता है, तो हम जीरो इंडेक्स को यूज कर रहे हैं, एंड इट हैव सम स्टेट व्हिच इज कॉल्ड रेडी स्टेट। अरे सॉरी सॉरी,
सर डिस्कनेक्ट हो गई क्या? पता नहीं, लग तो ऐसे ही रहा। वैसे क्या भी हुआ भाई attendance सब कम हो गया है। साइलेंट हुए? मैं मैसेज करके देखे क्या? हाँ, करना सर। बैटरी डाउन हुआ था ना सर का, तो मुझे लगता है इसलिए ये में। अभी आ जाएंगे सब विद इन अ सेकंड। ओके यार, सॉरी वो डिस्चार्ज हो गया था लैपटॉप। ठीक है, तुम कहाँ थे? स्क्रीन इज विजिबल? नो सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है, तो स्क्रीन इज विजिबल ना? Yes, sir. यस सर। तो दिस इज Yes, sir. mongo start connection 0.ready state। अगर ऐसा है, मतलब पहले से कनेक्टेड है, तो आई एम गोइंग टू हैंडल वन कंडीशन हियर। सो आई एम गोइंग टू गिविंग console.log connection is already exist, connection is already exist, and what we have to simply return from it। so ठीक है, ये है if for already connection is established, list, and second is what? For connecting with MongoDB, ठीक है, and third is for handling any error while connecting with MongoDB, ठीक है। तो अच्छा, कनेक्टेड टू अ MongoDB, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं db.json से mongo URI का नेम चेंज करके कुछ और लगा देता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। कॉन्फ़िग तो नहीं करना है। अच्छा, टर्मिनेट करते हैं सर्वर को, एंड नाउ npm टेस्ट, यस, नाउ इसको वो URI नहीं मिल रहा है, बट ओके, इट मीन्स कि हमारा सही है यार, क्योंकि मोंगो URI यहाँ पे अगर मुझे मिल रहा है तो देन ऑल थिंग इज ओके, अदरवाइज इट इज नॉट ओके। तो आई एम गोइंग टू कंसोल दिस आउट कि लेट const URI ऐसे चेक करने के लिए मैं डाल रहा हूँ कि प्रोसेस डॉट env डॉट व्हाट mongo URI। अब मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ, console.log what URI and URI। अब देखते हैं एक बार, यस URI हमें मिल रहा है एंड इट इज ओके। और अगर मैं अब यहाँ पे आदर्श ई कीड़ा हटा देता हूँ, तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसमें। यस, क्रैश कर गया, देख रहे हो? Yes, दिख sir. रहा है तुम्हें? Yes, sir. यस सर। क्रैश कर गया। मोंगो पार्सर है URI कनेक्टेड एम्प्टी यूजर इन्फो सेक्शन, तो इसको वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है अगर मैंने चेंज कराया तो। अब इसको ये कनेक्शन फिर से मिल जाएगा, स्टेबलिश्ड हो जाएगा। तो मुझे सर्वर क्या करना पड़ेगा? क्लोज, एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर सर्वर अगेन। सो यस, नाउ सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000 एंड उसके बाद कनेक्टेड टू अ मोंगो डेटाबेस। तो हियर व्हाट वी हैव डन येट, वी हैव utilized express server for creating our post API,
create an account on MongoDB Atlas, and we have connected our MongoDB cluster to our backend application. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So yes, our section 1 and section 2 has been completed here. And now in section 3, tomorrow we are going to make a API for a sign up and sign in. So here what we are going to learn, so मैं एक बार discuss बता ही देता हूँ थोड़ा बहुत, जिससे थोड़ा सा clear रहेगा कल next lecture में. So सर की आवाज नहीं आ रही ना? सर आप फ्रीज हो गए. गाइस वो नेट चला गया था. तो ठीक है गाइस, तो एक बार तो कल हम एपीआईज बनाएंगे लॉगिन एंड साइन अप की. उसके बाद हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिडक्स, एंड देन वी हैव अ full placed what login and sign up system, so you can use it in your any project as per your requirement. ठीक है? यस सर. Nice. सर बट आज वाला लेक्चर ये अपलोड हो जाएगा ना आज? क्या है कि फिर कल हम गो थ्रू हो पाएंगे इजीली? इट्स नॉट माय कॉल प्लीज यार, ये ना आपको कोऑर्डिनेटर से बात करना पड़ेगा, बिकॉज इसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ओके ये. सर. ठीक है, तो प्लीज आप एक बार कोऑर्डिनेटर को परेशान करें इसके लिए, वो आपको Yes, ना हेल्प कर पाएंगे. ठीक है, प्रेजेंट लगा दो. बिल्कुल यार, प्रेजेंट लगाने के लिए तो बैठे हैं भाई. ठीक है, चलो. ओके, सो स्टार्ट विद प्रतीक. अपने कल प्रेजेंट सर। अटेंडेंस ली थी क्या थी? सो टुडे इज व्हाट 20 नहीं यार, 24 25 26 आज डेट क्या है? 1 अप्रैल. ओके, तो अच्छा हाँ, पिछले हफ्ते लेक्चर्स हुए थे ना? यस सर। Yes, sir. यस सर.
तो इट मीन्स व्हाट की जो 24, 25, 26 के हैं ना, वो आई थिंक आपके 17, 18 के 17 नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता यार। अच्छा हाँ सही है एक्चुअली। वो कह रहे थे कि आपने अटेंडेंस लगाई नहीं थी। नहीं नहीं वही है ना, वो 17, 18, 19 की क्लासेस आपके नहीं थे ना, तो 24, 25 वाले उसमें मार्क हो गए। ओके कोई नहीं, चलो ठीक है। तो प्रतीक कल का भी बता देना है, प्रेजेंट थे? सर कल तो ज्वाइन करने की कोशिश की थी, ज्वाइन हुआ नहीं सर। ओके कोई नहीं, तो यस ठीक है। वावेश आदर सर। यस हेलो सर। आदर सर। हेलो यस अफजल बात कर रहा हूँ सर। जी बताओ। सर मेरा अटेंडेंस लगा देना, मैं थोड़ा इधर पे नमाज के लिए आया। यार ठीक है, किसी को ना बता दो अपने आसपास में, जो जब तुम्हारा नेम आएगा तो ये बता। ठीक है। अफजल नाम है भाई मेरा, कोई रहेगा तो बता देना। ठीक है अफजल शाह। ओके। वावेश यस सर, कल भी प्रेजेंट था, आज भी प्रेजेंट हूँ। ओके। अमन कुमार सिंह प्रेजेंट सर, कल भी प्रेजेंट है। विनय प्रताप सिंह, विनय प्रेजेंट सर। प्रताप सिंह प्रेजेंट सर। यस सर, प्रेजेंट सर। कल थे प्रेजेंट। हाँ जी सर, कल भी था। बरात संतोष, यार म्यूट कर लो यार जो भी म्यूट। संतोष, बरात संतोष, कोमल तिवारी, प्रेजेंट सर। अफजल म्यूट कर लो यार। who is यार। ठीक है। कुमारजीत प्रेजेंट सर। कल कल भी भी थे। प्रेजेंट। यस सर। सर संडे को भी थे सर, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क फोन ऑफ हो गया संडे वाले। चंदन यस सर। हिमांशी प्रेजेंट सर, कल भी थी आज भी हूँ। ओके। दुपाती प्रणव, भावना, फूलमाला भावना प्रेजेंट सर। ओके। सर भावना। हाँ हाँ। अफजल अकबर शाह, सर अभी वो गया। सर अभी बोलते प्रकाश यस सर, कल भी था। वैष्णवी, वैष्णवी सुजॉय, यस सर, प्रेजेंट सर। निखिल त्यागी, औसफ अनवर, यस सर, प्रेजेंट सर, कल भी था सर। आशीष रॉय, आशीष रॉय, यस सर, कल भी था सर। केशव Plain sir. Yesterday also I was present. ओके। विजयराज सिंह, विजयराज सिंह एक सेकंड यार। विजयराज सिंह ओके। यस सर, कल भी था आज भी हूँ। हेलो। हाँ हो गया भाई। आशुतोष सिंह, आशुतोष सिंह यस सर। कल भी थे। यस सर, कल भी था। राहुल नेमीचंद नहीं, शांतनु रस्तोगी, सर हैं वो, कनेक्शन प्रॉब्लम है, कल भी थे वो। संतोष तिवारी, यस सर, कल भी था आज भी। और आशुतोष गुप्ता, प्रेजेंट सर, आज भी हूँ, कल भी था। अच्छा। निखिल, निखिल प्रेजेंट सर, कल भी था, आज भी हूँ। दिनेश कुमार सैनी, विद्या, विद्या अथांग, कल नहीं था, आज प्रेजेंट हूँ। यार ये होते हैं अच्छे बच्चे।
सर हम भी सच्चे हैं, झूठे नहीं है। कुणाल सच्ची बोल कुणाल सिंह राजपूत, प्रेजेंट सर, कल भी आज भी। निवेश शर्मा, यस सर, दोनों दिन प्रेजेंट। सत्यजीत, विपिन कुमार, यस सर, कर देते हैं। प्रकाश। सर लीव हो सकता है क्या? अभी मैं ऑफिस में हूँ। बिल्कुल 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 हो सके, बिल्कुल भाई। आयुष कुमार शाह। अच्छा, एक अभिषेक कोई है, अभिषेक यस सर। डटार्य का फुल नेम क्या है भाई आपका? अभिषेक दत्तात्रेय भूसारे। अच्छा अच्छा, आप ही हैं फर्स्ट नेम। ओके, आप कब से हो आप बता दो, मैं लगा देता हूँ। सर कल थे 10 मार्च से। आप? कल थे? कल थे ना खाना। ओके, तो इसके इट मीन्स फर्स्ट मार्च से आपने सारी क्लासेस ली है, राइट? 10 मार्च से। 10 मार्च से, हम्म। तो ठीक है। 10 मार्च से, ठीक है। ओके ओके भाई, ठीक है। ओके गाइस, सो तो स्टार्ट करते हैं। सो सर मेरा अटेंडेंस नहीं है सर, बंदे शिरामठ। सॉरी, थोड़ा सा बाहर थे। सर मेरा अटेंडेंस नहीं है सर, नाम नहीं लिया आपने, बंदे शिरामठ। सर शान। शांत तुम्हारा हो गया यार। थैंक यू बंदेश सर। हाँ कल भी था सर, मैं वही मेरे का नाम आप बोल रहे तो वही वेट कर, तो नहीं आया सर अपना नाम। पॉपुलर है यार, कैसे नहीं आया होगा यार। सर नहीं नहीं सर, आया। मेरे पहले है, वो आपने नहीं लिया। ठीक है, बंदेश आप दोनों दिन थे, लिया राइट? सर, हाँ सर। यार मैं कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है गाइस, तो कल कंटिन्यू करते हैं। और प्लीज मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी क्लास में हो ना, उतना कम से कम कोड ना कर लिया करो सब, कि फिर ना आपके पास वो प्रोजेक्ट करने के बीच में, क्योंकि एरर्स बहुत आने वाले हैं जब तुम ट्राई करोगे खुद से, इवन देखने के बाद भी। और वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, छोड़ दोगे, फिर सोचोगे बाद में कर लेते हैं। तो साथ साथ में पैरेलली थोड़ा टाइम लगेगा, जितना लेक्चर में हुआ है वो चीजें अपनी कोड में कॉपी कर लो, देखो, क्योंकि वहां एरर्स आएंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। और बाद में इतने सारे लेक्चर्स हो जाएंगे कि फिर प्रोजेक्ट में आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, तो वो ट्रैक करना फिर आपको मुश्किल हो जाएगा चीजें कि कहाँ से क्या जा रही है। ठीक है, यस सर, कल से सर हम ऐसे आपके साथ साथ ही करेंगे कल से हम। साथ साथ कर लो, या बाद में 1 आध घंटे 2 घंटे बैठ जाओ, जितना हो जाए उतना साथ कर लो। बाद में तो वो नहीं, अपलोड ही नहीं कर पाते ना सर, इस वजह से अच्छा इश्यू रहता है। अच्छा, ये भी कोई सूझ है आपके साथ, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो क्योंकि मैं सर हेलो। कोड शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रीजन बिहाइंड इज दैट कि फिर वो होगा ना कि कॉपी पेस्टिंग हो जाएगी, कि भैया नहीं चल रहा है, सीधा उठाओ सर का कोड, कॉपी पेस्ट मारो, चल जाएगा। यस सर। तो है ना, इसलिए मैं कोड अभी गिटहब पे पुश नहीं कर रहा हूँ, कि फिर वो चीजें आप लोग पेस्ट नहीं मैनेज कर पाओगे। ठीक है, ठीक है गाइस, सर एक तो चीज पूछनी थी सर। हेलो। हम्म, सर ये पूछ रहा था कि ये मोंगोडीबी एटलस और कंपास में क्या अंतर है? ये कंपास इज बेसिकली यूज फॉर योर लोकल एनवायरनमेंट। आप लोकल अपने सिस्टम में कंपास यूज कर सकते हो, और मोंगो, ओके। और उससे क्या होता है ना कि आप लोकल में यूज कर रहे हो, अभी आप क्लाउड से डायरेक्टली उस यूआरएल से डेटा गेट कर रहे हो जो भी आपके क्लस्टर में पड़ा होगा। तो इट इज, मेरे लिए ना सेकंड वाला अप्रोच ज्यादा सही लगता है। एटलास मैं ज्यादा यूज करता हूँ एज कम्पेयर टू कंपास, बिकॉज कि फिर लोकल यूज करो, लोकल नहीं चला तो प्रॉब्लम है। ऐसे तो आपको सीधे यूआरएल देना है, आपका चल जाएगा, है ना? तो ओके सर। बेसिकली लोग, आई मीन डेवलपमेंट साइकिल में लोग ज्यादा इसको ही फॉलो करते हैं, क्या बोलते हैं, एटलास को ही ज्यादा फॉलो। एटलस को। ओके सर, ठीक है। ठीक है गाइस, सो बाय। बाय सर, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। ठीक ओके सर, है। बाय सर।